Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My dear students, hope you are all hale and hearty over there at your homes. We have been reading your chapter number 8. That's wrestling with the Phogats. Uh, Definite article here that has been used because a whole class is being represented by the Phogats. Okay, it's not Phogat like Mahavir Phogat. Phogats means the whole family members of the Phogats. So that's why that is generally used. Sorry, that is definitely used with the class. And we have been told about Mahavir Singh Phogat, who had dreamt about taking part in international competitions, even in the Olympics, but his dreams hadn't come true. Then he just settled down to a quiet job in a government job in his village. However, he had hopes that the sons that would be born to him would fulfill his dreams, but that was not the case. In 1988 he was bestowed with a daughter, and when he looked at her face, he was not disappointed. Rather, he had declared with love and confidence that she will one day made him proud of her, made him proud in his life. Sorry, वो उसको ज़रूर फ़ख्र महसूस कराएगा. The little girl was then named Geeta Phogat, India's first female wrestler to qualify the Olympics, and she did it as he hoped in his life. Today, the Geeta has 3 sisters and a brother. उसके एक भाई हैं और सॉरी 3 बहनें हैं. और उसके parents and her parents have also adopted Mahavir's brothers 2 girls. So total there were 5 girls: Geeta, Babita, Ritu, Sangeeta, Vinesh. Vinesh is the brother, and Priyanka. So 1, 2, 3, 4, and 5. This is 6. Okay. So they have been grown up. They have been taught to be international wrestlers in their life, and because wrestling was not thought to be a sports for girls to be taking part, rather it was a male-dominated sports in India. And we have been told about Chandi Ram, who was the first Pehlwan or the wrestler who tried to encourage women to take part in these sports, and he began training his own daughters. His determinations to include women in sports influenced his former student Mahavir Singh Phogat was his student, so he also take inspiration from that thing. Everyone in his village was strongly opposed to the Mahavir's having women in wrestling, but Mahavir had other ideas. If woman can be a prime minister of a country, why can't they be a wrestler or something else? So he began training Geeta Babita in 1988, and he used to take care of their schedule. It was very rigorous, very strict. He woke them up at 5 in the morning and set them running around the fields. Geeta was 10 years and Babita was 8. He also built an akhada and wrestling ring near their home for practice. We have read till here. Now we are continuing over here from this paragraph. As a coach, Mahavir was strict and demanding. Demanding means, देखो, we have demanding parents, you know. Demanding होता है यानी जो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आपसे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन चाहत होती है कि कुछ करेगा ये, तो जैसे डिमांडिंग. तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे शायद कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं. तो डिमांडिंग द एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ वर्क एंड एफर्ट्स फ्रॉम अदर्स, उसको कहते हैं डिमांडिंग. बहुत डिमांडिंग है. जैसे कि आपके टीचर्स चाहते हैं कि आपके बच्चे फर्स्ट आए, सेकंड आए, अच्छे पढ़ाए, तो उन चीज़ को डिमांडिंग है. वाइल अदर चिल्ड्रन आवर एज होना चाहिए यहाँ पे, वुड स्लीप कॉजली इन देयर बेड्स, यानी बेटर मूड, स्लीप इन देयर बेड्स. जब हमारे एज के जो बच्चे होते थे वो क्या होते थे, सो रहे होते हैं बेड में मज़े से. वी वुड बी अप बिफोर सनराइज, हम सूरज उगने से पहले उठ जाते थे. सिर्फ गीता कहती है, स्लीपिंग फॉर इवन 10 मिनट्स मोर वॉज ए लग्जरी. 10 मिनट और ज़्यादा सोने देते तो बस हमारे लिए तो लग्जरी थी. लग्जरी मतलब ए प्लेजर यू डोंट ऑफन हैव, जो आपके पास नहीं होती, ऐशो इशरत हो जाती बस 10 मिनट सोने तक. लेकिन अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा. इनिशियली द गर्ल्स वुड लुक फॉर एनी अपॉर्चुनिटी टू स्किप ट्रेनिंग. पहले तो ये बच्चे किसी तरह स्किप करने की, यानी छोड़ देने की, यानी स्किप एडवर्टाइजमेंट स्किप करते हैं जैसे कि, तो इसको छोड़ देने की कोशिश करते, ट्रेनिंग से बचने की कोशिश करते. बट दे ग्रीव टू लव द लाइफ ऑफ ए रेसलर, मगर अब वो उनको बहुत पसंद आने लगा. द एग्जॉशन
एग्जॉशन क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड। एग्जॉशन होता है, एग्जॉस्ट फैन देखा होगा आपने, बाथरूम में लगा होता है, किचन्स में लगे होते हैं, जो गंदगी को बाहर निकालने के लिए एक पंखा लगाता है, तो उस तो एग्जॉस्ट मतलब अंदर से खाली करके बाहर निकाल देते, तो आपका अंदर वाला खाली हो जाएगा ना। इसी तरह ये इंसान की एनर्जी के बारे में बोल रहा है, अंदर से खाली हार्ड वर्क करेगा तो। आफ्टर हार्ड डेज ट्रेनिंग, दिन भर की ट्रेनिंग की वजह से जो थकावट होती थी वॉज सेटिस्फाइंग, बहुत ही इत्मीनान पुरसुकून होता था। इट वॉज अ ग्रेट एडवेंचर, यानी एडवेंचर मीन्स ए थ्रिलिंग एक्टिविटी जिसमें बहुत मज़ा आता है, बट इट ऑल्सो कंटेन्स सम रिस्क, उसमें कुछ खतरा भी होता है, जैसे बॉक्सिंग में है। सेज बबीता, बबीता कहती हैं, एंड व्हाट मेड इट स्पेशल वाज दैट वी वर द ओनली गर्ल्स इन द विलेज हु वर डूइंग दिस। This is what's make it special, that we were the only girls who were taking part in this game. There were no others in their village. ठीक है, but the villagers thought the family had gone mad. अब गांव वाले कहते कि ये तो खानदानी पागल हो गया। Their attitude towards the Phogats became worse when Mahavir started training the girls along with boys. Boys के साथ ट्रेनिंग लगाना शुरू किया तो सब उसके खिलाफ हो गए। People were furious. Furious एंग्री होता है ना, गुस्से को कहते हैं। फ्यूरियस होते बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना, तेज बिल्कुल। तो दे वुड से वो कहते ही इज़ डिस्ट्रॉइंग द विलेज, वो गांव को ख़राब कर रही है, नो शेम, उसको कोई शर्म हया नहीं है। सेज महावीर, महावीर ये बात कहता है जे, क्योंकि उसको ये बातें कहा जाता था। विलेजर्स थाउट द गर्ल्स वुड बिकम लाइक बॉयज, वो लड़कों की तरह बनता जाए। दैट देयर फेसेस वुड गेट मेस्ड अप, उनकी चेहरे ख़राब हो जाए। मेस्ड अप होता है यानी ख़राब हो जाना। अप एंड नो वन वुड मैरी देम, उनसे कोई शादी नहीं करेगा। दे मेड देयर डिसअप्रूवल क्लियर टू द फोगाट्स, फोगाट्स को वो बिल्कुल डिसअप्रूवल क्लियर कर देते, बिल्कुल इनकार कर देते थे वो। इट वॉज अ स्ट्रेसफुल पीरियड, यानी एक परेशान कुन टाइम था फॉर द फैमिली, बट दे वुड नॉट स्टॉप, मगर वो रोकते नहीं थे। माई मास्टर चंदीराम टाउट मी, ये महावीर बोल रहा है, मुझे सिखाया था टू फेस डिफिकल्टीज लाइक वी फेस आवर ओपोनेंट्स ऑन द फील्ड, जैसे कि हम मुकाबले में सामने वाले का फेस करते हैं, इस तरह ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करो। सेज महावीर, महावीर कहता है। द टर्निंग पॉइंट केम इन 2010, 2010 में आए, वन गीता वन इंडियाज फर्स्ट कॉमनवेल्थ गोल्ड, कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता इन वुमेंस रेसलिंग। द एंटायर विलेज वॉज एक्सटैटिक, एक्सटैटिक होता है बहुत ही हैप्पीनेस सुना है, एक्सटैटिक होते बहुत ही ज़्यादा खुशी के माहौल में, तो देखो वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड हो जाना। दे सेलिब्रेटेड फॉर 10 days स्ट्रेट, 10 दिन पूरा खुशी मनाते रहे। दे फॉरगॉट फैमिली वेर हीरोज, अब वो हीरोज बन गए। they were no longer a matter of shame, अब वो शेम का कोई मैटर ही अब नहीं बचा फॉर द विलेज, गाँव के लिए। ठीक है, keep it till here, we will continue it in our next class inshallah. Till then, take care and keep reading your books. Thank you for your kind attention.